ओके, तो देखो, कोई भी मूवी उठा के आप देख लीजिए या कोई भी स्टोरी आप सुन लीजिए, सो आप पाएंगे कि ऑलवेज देयर वुड बी अ पर्सन विथ अ प्रॉब्लम. नाउ दैट पर्सन कैन बी मैन, वुमन, एनीवन, राइट? बट देयर वुड बी अ पर्सन विथ अ प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम. तो ऐसा क्यों होता है कि पीपल लव दोज स्टोरीज जिसमें उनको कोई पर्सन मिलता है जिसको प्रॉब्लम्स होती है? तो जब आप रीजन देखोगे, तो आई वुड से थिंक अबाउट यू, मी, every other person on the face of planet. They all have problems. None of us are free from the problems. We have problems in our life, in our relationships, in our finances, in our career, related to our health. In many areas, you might have problems. So, जब आप किसी पर्सन को लेके आते हो स्टोरी में और आप उसके स्ट्रगल को दिखाते हो और उसके बाद वो पर्सन उस प्रॉब्लम से ओवरकम करता है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम दोज थिंग्स गिव होप, मोटिवेशन. Try to use this principle. Tell a person with a problem in your stories. This can either give a hope or maybe no hope, but this would be a good influencer